ओके, हम बात करेंगे सरफेसेस ऑफ रेवोल्यूशन, द जनरल सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। तो जैसा कि हमने एग्जांपल्स दी है, जैसे स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है, और भी बहुत सारे। इनफैक्ट टेक ए कर्व एंड रोटेट इट, तो हमें मिल जाता है एक सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। तो मेरे कहने का मतलब है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन ऐसे है, तुम्हारे पास कोई कर्व है इस प्लेन में, मान लो ये एक्सिस तुम्हें कोई दी एंड यू रोटेटेड दिस अबाउट दिस एक्सिस, so what you would generate would be a sort of a generalized cylinder, जैसा मेरे हमें सरफेस जनरेट होगा। उसके जो लोकस होगा उस कर्व का, जैसे अगर तुम स्ट्रेट लाइन लोगे, अगर तुम इसको रोटेट करोगे अराउंड दिस एक्सिस, व्हाट यू शुड गेट, लोकस होगा उस लाइन का जो वो ट्रेस करेगी सरफेस, which should be a cylinder. And similarly, अगर तुम ले कोई semicircle, let's think about it in this manner, अगर ये semicircle है, इसको ऐसे ही rotate करोगे about this axis, तो जो surface ही trace करेगा, ये जो surface generate होगी, so it would be sphere. अगर तुम at an angle किसी line को लोगे और इसको rotate करोगे again around this axis, so you will get cone. So all these are examples of surfaces of revolution. You have a curve in some plane, and then you rotate it around an axis, and you get a surface that's traced by that's generated by that curve, by the rotation of that curve. We call that a general surface of revolution. And now we want to find the equation of this general surface of revolution. Given that we know the equation of the curve that generates it, तो अगर हमें कर्व के बारे में पता है तो हम सरफेस के बारे में क्या पता कर सकते हैं? So वो होगा हमारा to find the equation of the general surface of revolution. So let's start. Next page पे करते हैं। जरा लिखते हैं पहले what do we mean by जो मैंने कहा general surface of revolution. हाँ, मैं एक चीज बता दूं, ये जो आज से जो हम या इससे पहले भी यूनिट थर्ड जो था, यूनिट थर्ड एंड फोर्थ ऑलरेडी जो मैंने पिछले साल पढ़ाया था, एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, वो ऑलरेडी लेक्चर्स वहां पे है। तुम चाहे तो ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का वहां से भी देख सकते हो ऑलरेडी ना, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है तो उस पर ऑलरेडी ये लेक्चर्स हैं थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के। तुम अगर इन एडवांस अगर उनको देखा करो तो दैट वुड बी गुड। वैसे मैं इनको भी अपलोड कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इन केस मिस हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के तो सारे के सारे वहीं पे ऑलरेडी, इट्स मतलब पूरा एक प्लेलिस्ट की टाइप में है, तो उसमें से तुम चेक कर सकते हो। नाउ व्हेन अ प्लेन कर्व, जो मैंने अभी कहा, curve is rotated about an axis in its plane, the surface generated in this manner is called the surface generated in this manner is called what is called the surface of revolution. Now we want to derive an equation, right? What we do, just to make derivation a little simpler, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे zx प्लेन को, that's easier. ये मैंने x ली, लेकिन मैंने इसका नाम रख दिया z, कोई दिक्कत नहीं, हमारे कन्वेंशन के थोड़ा खिलाफ है, क्योंकि कन्वेंशन में हम लेते थे इसको x, इसको y और इसको z, लेकिन just to make our derivation a little simpler, so I take this xz plane and I take some curve in this plane, right? तो ये जो कर्व है ये xz प्लेन में है, तो इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी वो कैसी होगी? It would be मतलब z is equal to some fx, right? और ये तो होगा एक्सप्लिसिट फॉर्म किसी कर्व का,
जो इस प्लेन में है, और it could be in the parametric form. Say x is equal to some, let's call it h of some parameter u, and z is equal to some other function, let's call it f of u. That's the convention. में हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लेंगे. जैसे तुम्हें पता है ना, अगर कोई कर्व हो किसी प्लेन में, जैसे ये मान लो अपना एक्स वाई प्लेन है, राइट, तो वहां पे होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. वो कौन सा पैराबोला है? ये. लेकिन इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन हो सकती है x इज इक्वल टू u, y इज इक्वल टू u स्क्वायर. दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन. और अगर मेरा ये z एक्स प्लेन में होगा यही पैराबोला, तो इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है? It would be z is equal to x square, or I could write it as x is equal to u and z is equal to u square. तो ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है. तो ये होगा अपना जो मैंने ऊपर लिया h of u, और ये होगा मेरा f of u. So in general, अगर ना, ये तो कोई पर्टिकुलर कर्व के लिए मैंने यहाँ कहा, इसी तरह से z x प्लेन में मैं ऐसे ले सकता हूँ एक कर्व. अब अगर मैं इसको रोटेट करूँ, है ना, इसको मैं अगर रोटेट करता हूँ अबाउट z एक्सिस, सो ये यहाँ पे y एक्सिस है. y एक्सिस का मतलब, लेट मी इसको इरेज कर रहे हैं. ओके, तो अगर मेरी y एक्सिस इस डायरेक्शन में है या उस उल्टी डायरेक्शन में, डिपेंडिंग अपॉन और साइन कन्वेंशन, वैसे उधर होनी चाहिए, डजंट मैटर, यानी इस साइड पे उसको नेगेटिव साइड. तो इट मींस इट्स कमिंग आउट, मतलब जब मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मींस इट्स कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन. It's piercing through rather this screen. एक साइड इधर पे, तो that's our z axis. तो अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, राइट, तो पहले अगर मैं सोचूं मतलब ये कुछ ऐसी सरफेस बनेगी जो भी है, एक जनरलाइज्ड सिलेंडर जैसा, दैट्स वन इशू. तो पहले जो यहाँ पे अगर इसका कोई पॉइंट होगा, ऑफ कोर्स इसका x कोऑर्डिनेट होगा h of u, और z कोऑर्डिनेट होगा f of u, because that is the definition of the curve. That's the equation of the curve. लेकिन अगर ये zx प्लेन में है in the beginning, rotate के before rotating it, तो इसका z, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, क्योंकि xz प्लेन में y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, right? So let me write it. तो अब मैं यही बात लिखूंगा. If we take the axis of revolution to be z axis, या पहले लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी चलेगा. Revolution to be z axis, and let the parametric equation of the plane curve in zx plane जो होता है, it is the same thing as y equal to 0, be given by x is equal to h of u, where h u is some parameter, y तो 0 होगा क्योंकि हम zx प्लेन में है, and z is equal to some f of u. मेरी जो पैरामीट्रिक कर्व है वो क्या है? x is equal to, तुम्हें याद रखना, it's given, मुझे ये दिया हुआ है, and I want to find the equation of the surface in general. Now if this curve be rotated, अगर हम इस कर्व को रोटेट करते हैं through some angle, now if this curve is rotated through some angle, let's call this about the z-axis, some angle, let's call it phi. अगर मैं इसको phi रोटेट करता हूँ, यानी अब ये कर्व कुछ यहाँ पे आ जाएगी, है ना, ये जो यहाँ, अब ये इट्स कमिंग, ये 3 डायमेंशन में तुम्हें सोचना है. तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट था, अब वो यहाँ आ गया, and I have rotated it through phi. ठीक है, but you have to imagine it in 3 dimensions. तो पहले इस प्लेन में था, अब of course इसका आप कोई y मतलब
वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। और वो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सो लेट्स सी। पहले तो मुझे सोचना है कि ये जो रोटेशन है इट वुड ऑफ कोर्स, जब मैं रोटेट कर रहा हूं तो आई एम गोइंग अराउंड अ सर्कल, है ना? और ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस जो है वो है एक्स कोऑर्डिनेट एच ऑफ यू। तो अगर तुम किसी सर्कल पे हो जिसकी रेडियस है एच ऑफ यू, और वो एंगल तुमने जो इनिशियल पोजीशन से लिया है, देन उसके जो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए इन दिस प्लेन, मतलब जो ना ये सर्कल है, हम घूम रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं पर भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ऑन जेड दिस। अब चेंज जो होगा हमारा वो जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, then the coordinates of an arbitrary point, then the coordinates of the point are given by, यहाँ जगह होनी चाहिए, यहाँ x इक्वल से तो मैं लिखता हूँ h of u into cos of phi, y होना चाहिए h of u into sin of phi, और z होना चाहिए f of u। मेरे कहने का मतलब है ये जो यहाँ पे पॉइंट था ना, ये जो ये x कोऑर्डिनेट है इस एक्सिस में, x इज इक्वल टू एच ऑफ यू, सो ये लेंथ है एच ऑफ यू। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ, तो वो है z कोऑर्डिनेट, यानी वर्टिकल डिस्टेंस इन द zx प्लेन, सो दिस इज f ऑफ u, राइट? अब जब मैं इसको रोटेट करूंगा, ये जो z कोऑर्डिनेट जो होगा ना वो तो चेंज नहीं होगा, वो f ऑफ u ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हाइट सेम रहेगी जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, हाइट इज f ऑफ u। और ये जो ये चेंज होगा एच ऑफ यू, राइट? अब जाहिर सी बात है किसी भी सर्कल की अगर उसकी रेडियस है, ये ऐसे ही है, अगर कोई सर्कल है यहाँ पे ऐसा रेडियस आर है, या तो इसका कोई भी हम जो कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं आर कॉस थीटा और साइन थीटा, राइट? इफ दिस इज जीरो, ऑफ कोर्स दिस इज aligned with the zero, that's not an issue. So what I'm trying to say, तो अगर ये मतलब थीटा करेगा मतलब ट्रेवर्स इन सर्टेन डायरेक्शन, तो इसी तरह से ऑफ कोर्स तुम कहोगे फिर मतलब शुरुआत में क्या था? शुरुआत में ऑफ कोर्स यू टेक थीटा इक्वल टू जीरो, तो व्हाट यू गेट? शुरुआत में तुम्हें मिलना चाहिए था आर और जीरो इन द बिगिनिंग, जब थीटा इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज cos थीटा इज 1 एंड sin थीटा इज 0। तो लेकिन जैसे ही हम इसको फिर सारे पॉइंट्स पे रोटेट करेंगे, मेरे कहने का मतलब जब भी हम इसको रोटेट करेंगे ऐसे ही किसी भी जगह अगर मैं रोटेट इसको करता तो यही होता, लेकिन ऑफ कोर्स ऊपर नीचे जाने से क्या चेंज होता? हाइट व्हिच वुड बी गिवन बाय एफ ऑफ यू एट एनी पॉइंट, क्योंकि इस कर्व का हाइट जो है वो जो z कोऑर्डिनेट है वो फिक्स्ड है, h of u is given by this function. So in general हमें x y z कोऑर्डिनेट उसके ये मिलने चाहिए. So in that way, so the required equation of the surface of revolution is given by, let me write it here, let's write it at r at u theta u phi मैंने लिया था is equal to h of u cos of phi, y of u, मैं क्या लिख रहा हूँ, y is h of u sin phi, h of u sin of phi, and then this is f of u. अब दिस इज द इक्वेशन, और यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स एक तो पैरामीटर है कर्व का, वो तो u है, दूसरा है जब हम रोटेट कर रहे हैं तो उसके लिए जो दूसरा पैरामीटर जो चेंज चीज हो रही है वो है अपना फाई। तुम चाहे तो इसको लिख सकते हो, क्योंकि हम यूजुअली पैरामीटर का नाम v रखते हैं तो डजंट मैटर, you write it as h of u cos of b, h of u sin of b, f of u. Furthermore, अब क्योंकि हमने जो पहले लिया था ना इक्वेशन, हमने लिया था zx प्लेन में, हमने लिया था इस तरह से x और z,
प्लेन में, राइट। और ये लिया था हमने z इज इक्वल टू क्या लिया था, f of u and x is equal to h of u, जो ना ओरिजिनल इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर हम लें बजाय इसके कि x को x ही रखें, राइट, मतलब अगर हम जनरल लिखते x मतलब z इज इक्वल टू f of u ही ले, मतलब बजाय मतलब पैरामीट्रिक के बजाय you just take x equal to u, and so that z is equal to f of x can be written as z is equal to f of u। यानी एक ही पैरामीटर हम चूज कर सकते हैं, मतलब we can write it in explicitly। ये हमने किया था ताकि हम इसको डिराइव कर सके। Now we can go back and write it in an explicit manner, the equation of the curve जिससे हमने generate की as z is equal to f of u। So then if I choose my parameter x to be u, you can write it as u cos v, u sin v, f of u। लेकिन अब मेरी पैरामीट्रिक कर्व है जिससे मैंने शुरू किया था, वो ये नहीं है, वो ये है, z is equal to f of x in the explicit form, जैसा कि होता है हमारा y is equal to f of x, इस टाइप की प्लेन कर्व जो बनती है। सो ये हमारा होगा जनरल नोटेशन और दिस सर्फेस ऑफ रेवोल्यूशन। इसको भी हम कभी यूज करेंगे क्योंकि कभी कभी ये इजी हो जाता है, कभी कभी ये इजी हो, हम दोनों को रखेंगे। ये तब हो गई इस टाइप की इक्वेशन जब ये वाली, जब हमारी पैरामीट्रिक कर्व इज गिवन, मतलब जो हमारी प्रोफाइल कर्व या जनरेटिंग कर्व जिससे हमने सरफेस जनरेट की, अगर वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो इस टाइप की, अगर वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में है मतलब इस तरह से है, देन ये इक्वेशन। बट दोनों ही सरफेस रेवोल्यूशन, मतलब सरफेस रेवोल्यूशन है। और पैरामीटर तो खैर नाम है, उसको फाई रखो, यू रखो, वी रखो, डजंट मैटर। ओके, so this is, so okay, is this मतलब पहले मैं यहाँ, ये नोट्स का हिस्सा नहीं है, हमने पहले ये डिराइव किया था, राइट। नाउ टेकिंग h of u equal to u, we get r at u phi is equal to u cos phi। रीजन मैंने बताया हम कैसे कर सकते हैं, u sin phi f of u, which we can also write as, which is the equation of the surface of revolution given or generated by the surface z is equal, generated by the curve, sorry, z is equal to क्या था अपना f of x, it could be z is equal to f of u, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है ना हमसे, मतलब this can also be written as, क्योंकि हम पैरामीटर्स का नाम u भी देते हैं, this can, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, can be also written as r is equal to r h u v through perform में, so it will be u cos v, u sin v, and of course f of u। तो अब तुम याद रखोगे, this is our surface of revolution। अब देखो, अब जो हमारे पास है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन काफी स्पेशल, मतलब स्पेशल इन द सेंस इजी इसको स्टडी करना, क्योंकि हमें कर्व के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। तो जैसे हमने ये अभी बनाया था, सिचुएशन इस तरह से थी, फिर हमने इसको रोटेट किया, फिर कुछ ऐसा मटका जैसा बनेगा ये, राइट। तो इस तरह की हमारी सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है, हमने इसको रोटेट किया। फर्दरमोर, तो अब इसमें क्या है, एक स्पेशल कर्व्स हैं, जैसे ये, जैसे कि तुम सोच सकते हो, ये कर्व जो है, इस पे ये हाइट जो है ये फिक्स्ड है। हाइट फिक्स्ड का मतलब z कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, यानी f of u is fixed। f of u changes when we change the point on this curve। अगर मैंने पॉइंट फिक्स कर दिया, जब मैं रोटेट दूसरे पॉइंट पे f of ये जो हाइट है ये चेंज होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे u is constant because f of u is constant है।
u चेंज होगा तो f चेंज होगा, बिकॉज f डिपेंड्स अपॉन u। यानी अगर मैं u को कांस्टेंट रखता हूँ, u पैरामीटर को, तो इसका मतलब I would be fixing a point on my ओरिजिनल प्रोफाइल कर्व। तो फिर जब मैं उसको रोटेट करूंगा, जब मैं v को चेंज करूंगा, जब मैं v को चेंज करूंगा, I will get this curve. So this would be my v curve, या ये एक और v कर्व बनेगी। मैंने यहाँ फिक्स किया, u को रोटेट, मतलब u को चेंज किया, v को u को कांस्टेंट रखा, v को चेंज किया, so this would be another v कर्व। तो ये जो सर्कल्स है, ये मेरे v कर्व्स बनेंगे, क्योंकि वहां पे ये थीटा जो था v चेंज हो रहा है when I go around this point at a particular height। तो ये जो सर्कल्स बनेंगे, तो ये मेरी v कर्व्स होंगी, क्योंकि u कांस्टेंट है। और ऑफ कोर्स अगर मैं ये अब अगर मैं इस एंगल को फिक्स करूं, u को फिक्स करूं, मतलब मैंने इस एंगल को एक ही रखा और नीचे गया, मतलब रोटेट नहीं किया, बल्कि एक ही एंगल जो यहाँ पे था इस एक्सिस के साथ, वो सेम रखा मैंने, एंगल सेम है, लेकिन ऑफ कोर्स ये मतलब v फिक्स है, और क्या बोल रहे हैं, u को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो आई एम गोइंग अलोंग द कर्व, सो दे वुड बी सॉर्ट ऑफ पैरेलल कर्व्स टू द ओरिजिनल प्रोफाइल कर्व। so they are my u curves। तो ये पैरेलल लाइंस बन रही है। बेटर स्टिल आई थिंक आई शुड हैव, अगर मैं स्फीयर की एग्जांपल लूं, तो अगर मैं स्फीयर की एग्जांपल लूं, ये जो सर्कल्स बनेंगे, सो दोज आर माय v कर्व्स, ये भी एक सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है। और ये जो सेमी सर्कल्स बनेंगे इसमें, इन दिस केस व्हिच आर सॉर्ट ऑफ पैरेलल टू my original profile curve, जिस सेमी सर्कल को मैंने रोटेट करके स्फीयर बनाया था, these would be my u curves and this would be my v curve, my parametric curve जो हमने कहा था, वो ना जो ढांचा जिससे ये बनता है। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ वर्ड इसमें, parametric curves on the surface of revolution। The curves u equal to constant कौन सा मैंने कहा था, v curves, यानी ये are called the parallels, parallels बोलते हैं, obviously parallel circles type है, are called parallels। और of course अगर तुम ग्लोब पे, हम इसको कहते हैं शायद parallels of what, longitude, I see, not latitude, नहीं longitude, okay, parallels हम यहाँ रहेंगे, that is they are the intersections, हम कह सकते हैं they are the intersection of the surface by the planes perpendicular to the axis, which is rather obvious, by the planes perpendicular to our axis of revolution। Now I can think of them as they are the curves of intersection of any plane that is perpendicular to my axis, perpendicular to my axis, इस तरह का plane जो इसको intersect कर रहा है different levels, तो intersection में हमें circles मिलेंगे, तो वही होंगे हमारी what we call u curves, only v curves is equal to constant, means v curves। And for example, जो मैंने कहा, in case of spheres, in case of a sphere, these parallels are the circles in the plane, zero circles लिखते हैं। दूसरा, second, the curves v is equal to constant, यानी मैं u curves are the, इनको हम बोलते हैं meridians, are called meridians, क्योंकि उसी वजह से ग्लोबल में हम हमको meridians कहते हैं लाइंस को, और they are the intersection of the surface by the planes through the axis, by the planes through the axis of revolution
जो कि हमने मानी थी z एक्सिस, हमारे केस में वो z एक्सिस थी, बट इट वुड बी एनीवेयर, ये तो हमने चूज किया था। सर्कल्स ऑफ रेवोल्यूशन ऐसे भी हो सकती थी, एक्सिस ऐसे बनाओ, रोटेट करो, राइट। तो हमने अपने वो जो उसको डिराइव करने के लिए, उसके लिए इक्वेशन ढूंढने के लिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स किया, कर्व फिक्स किया। ऑफ कोर्स दीज आर एक्चुअली द कर्व्स जो हैं, दीज आर इंटरसेक्शंस ऑफ दीज प्लेन्स। अगर हम यहाँ पे बनाएं तो ये जो मेरिडियंस होंगी, दे आर क्लियरली द इंटरसेक्शन of those planes which go through the axes, which contain the axes. ये तुम imagine थोड़ा कर सकते हो। Okay, the question is, फिर हमारी ये जो curve है वो क्या है, right? जैसे for अगर मैं तुम्हें कहूँ मेरे पास ये था एक सेमी सर्कल जो ना ओरिजिनल प्लेन में था, right? मान लो of unit radius to make things easy. So it's in my, what was the plane? My plane was XZ plane, right? तो of course अगर ऐसा है तो इसकी प्रोफाइल कर्व क्या बनेगी, सेमी सर्कल की कर्व क्या बनती है, ये would be h of u would be, यानी I mean the z coordinate would be this thing, which is of course cos u h of u, and f of u पे मैं ले सकता था sin। तो ये मेरी प्रोफाइल कर्व बनेगी, और फिर जो इसको मैं रोटेट करूंगा तो स्फीयर बनेगा। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं उसमें, तो फॉर यूनिट स्फीयर, तो इन दिस वे अगर मैं एग्जांपल दूं, यूनिट स्फीयर की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन बनेगी, दैट विल बी r क्यूबी, क्योंकि इसकी रेडियस बनी रहेगी। इट वुड बी, मैंने प्रोफाइल कर्व लिया, सो आई हैव h of u, I should have cos of u, cos of v, cos of u, sin of v, and of course f of u यहाँ पे आएगा, that's sin of u. So this is a genuine parametric equation of a sphere. Genuine का मतलब हमने इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है, राइट। एंड ऑफ कोर्स ये जो u के वैल्यूज होंगे, u हैज टू बी अ सेमीसर्कल जिसको हमने रोटेट किया, तो u वुड लाई बिटवीन 0 and 2 पाई, और v चूंकि पूरा चक्कर काट रहा है, v अराउंड ऐसे घूम रहा है ना सर्कल, जो हमने इसको बनाया था, एंड सॉरी दिस शुड बी लेस देन पाई क्योंकि सेमीसर्कल है, और v जो है दैट शुड बी बिटवीन 2 पाई। So this would be equation of the circle. So of course इसका जो डोमेन भी अब मैं सोच सकता हूँ, इसकी डोमेन होगी 0 पाई क्रॉस 0 2 पाई। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट u यहाँ बिलोंग करता है, v यहाँ बिलोंग करता है, तो अल्टीमेटली हमें जो क्या बोलते हैं, हमें स्फीयर मिलता है by via this parametric equation. Similarly you could have, जैसे कोन है, कोन के लिए क्या चाहिए, आई कैन टेक दिस लाइन जिसमें मैं एक्चुअली h of u को भी u ले सकता हूँ, मतलब दिस इज द लाइन z is equal to x। तो फिर कोन की क्या बननी चाहिए, कोन की इस हिसाब से बननी चाहिए, you can write it as u cos v, u sin v, u, राइट। लेकिन ये वो कोन है, मतलब जिसका ये जो एंगल है यहाँ पे वो 45 डिग्री मैंने लिया, z is equal to x, और you could be z is equal to mx में ले सकता था। तो अकॉर्डिंगली तुम फिर यहाँ कोई कांस्टेंट आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है u cos v, u sin v, z को मैं लिख सकता हूँ some alpha times जनरलाइज्ड कोन, जरूरी नहीं है ये। so this would be my equation of the cone, मतलब जो हम डिफरेंट सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है उनको कर सकते हैं। How about a cylinder? सिलेंडर के लिए क्या होना चाहिए, सिलेंडर के लिए क्या है कि किसी भी पॉइंट के लिए ये जो है ना, इट्स जस्ट इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये z है, ये x है, इट मींस दैट इसकी इक्वेशन है कि x इज कांस्टेंट, z कुछ भी हो, राइट। यानी x मुझे कांस्टेंट चाहिए, तो इसकी होनी चाहिए सिलेंडर की पैरामीट्रिक इक्वेशन r at u v, x is just constant, so that is x means u, x means h of u, पहला वाला, so it is some constant times cos v, some constant times sin v, then what will be y coordinate, y coordinate भी constant ही होगा, है ना, no, y z could be anything, जरा कहीं और पे लिखते हैं,
सिलेंडर का क्या होगा? ओके, अब फर्दर मोर मैं हम सिलेंडर का क्या होगा, हम तो कंफ्यूज हो गया खुद। तो सिलेंडर की इक्वेशन ये है, ये जो इसका दिस इज माय एक्स सेट प्लेन जो मैंने लिया था x इज इक्वल टू h ऑफ u, z इज इक्वल टू f ऑफ u। अब अगर तुम्हें इस लाइन को कैसे तुम पैरामीटराइज करोगे? इसका मतलब है x is equal to constant, it doesn't change, it's parallel to z axis, so x is some constant. What about z? Z could be anything. Z is z. Z is z. तो क्या हुआ? u भी लिख सकते हैं, जरा देखते हैं। R at u, v x h of u जो है वो कांस्टेंट है, so it is c cos u, d sin v, sorry v, c cos v, c sin v, what should be the z coordinate? It could be anything. Anything का मतलब क्या है? It could be our z coordinate. तो सिलेंडर की क्या होती है इक्वेशन? x square plus y square is equal to some alpha. तो ये तो इन्हीं के साथ आएगा, so it should be just c. Right. सिलेंडर की होती है कोई भी where alpha is an arbitrary constant. z coordinate इस हर पॉइंट का क्या होगा? z ये हो सकता है, z ये हो सकता है, z कुछ भी हो सकता है, या तो मैं लिखूं z, what is z? Anyway, इसको जरा मैं चेक करूंगा, इससे ज्यादा मसला नहीं है, पता नहीं मुझे क्या चल रहा है। लेकिन अब इसमें खास बात है, जो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है, इसमें जो पैरामीट्रिक कर्व्स अब हमें पता है, एक तो ये पैरेलल्स है और दूसरे ये व्हाट वी कॉल पैरेलल्स हैं और दूसरे मेरिडियंस हैं, जो ये इसके जो पैरामीट्रिक कर्व्स हम इजीली चेक कर सकते हैं। अगर मैं लेता हूँ जनरल सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो कि है u cos v u sin v f of u, तो I can evaluate, जैसे अगर मैं ru लूँ, just partially differentiated, so it should be cos of v, sin of v, and f dash of u, so differentiating with respect to u, and r of v क्या होगा? It would be minus u sin of v u cos of v, partially differentiate करें और ये zero, it is only a function of u and u is treated as a constant. So what is ru dot rv? ru dot rv होगा इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, तो होगा minus cos v into u sin of v plus sin of v into u cos of v plus 0. And as you can see, I think you've got cos v यहाँ पर भी है, sin v यहाँ पर भी है, so this is just 0. इसका मतलब this is nothing but the f, the second fundamental magnitude. इसी तरह से तुम देखोगे जब तुम evaluate करोगे, मैं चाहूंगा home assignment find that n is 0. और हम कर चुके हैं कि अगर f 0 है और m 0 है, तो जो पैरामीट्रिक कर्व्स है वो होगी लाइंस ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब ये हुआ जो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन में है, और सिंस यहाँ में लिख सकते हो मैं रिमार्क, लेकिन ये तुम करो, सिंस f is equal to 0 and m is equal to 0 for a surface of revolution, जो कि तुम कैलकुलेट करोगे, the parametric curves are the lines of curvature for any surface of revolution. Okay, so इसके बाद हम क्या करेंगे? Let's leave it. Okay. Now we want to find the principal curvatures के क्या हो?
now the KA and KB. We want to find them for this particular surface of revolution. Well, this particular, any surface of revolution means this particular type of surface which is generated by rotating a plane curve about some axis in that plane. Now, principal curvatures. For a surface of revolution. Now we know that जैसा कि हमने किया, any point on a surface of revolution is given by this equation. It's given by जो उसकी equation है, जो कि हमने लिया था u cos v, u sin v, and of course here what's f of u, जो कि मेरी profile curve. So what we do, we मुझे parametric curvature, principal curvature ढूंढने हैं, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, they are the roots of this equation. H square इसके roots k sub n square minus en plus gl minus twice fm times k sub n then plus t square is equal to 0. यानी अगर मुझे इसके roots when I solve for k and this quadratic equation जो मुझे values मिलेंगी वो है k a and k b. And k and kb would be minus b plus minus जैसे करते हैं ना, ये वो होगा en plus gl minus twice fm, तो ये होगा minus b plus minus b square, that is b square means this whole thing square minus ac, मतलब divide by 2a जैसे तुम करते हो quadratic equation. तो k kb are the roots of this quadratic equation. So if I am trying to find, इसको मुझे लिखना चाहिए, okay. If I am trying to find the principal curvatures of anything, so I have to find the first and second order fundamental magnitudes. ताकि वो मैं इसमें substitute करूं और फिर उसके principal curvatures ढूंढूं. Okay, तो उसके लिए मुझे partially differentiate करना पड़ेगा at least twice. अब हम क्या करेंगे to make our life simpler, क्योंकि मुझे इसको 2 बार differentiate करना है. तो चूंकि it's a function of single variable जो मेरा z coordinate है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे in place of f dash u, और लिखते हैं हम कभी-कभी इसको हम f1 लिखेंगे, और f double dash u को इसी तरह से हम लिखेंगे f11. ठीक है, मतलब this would be our notation ताकि हम जल्दी से कर सकें. ठीक है, इसका मतलब ये, इसका मतलब notation है, कोई खास फर्क नहीं. So having done that, so r of u would be equal to, accordingly, it would be cos of v, sin of v, और मेरी notation के हिसाब से it should be f1, right? f dash r at v, जैसे कि मैंने भी निकाला, it should be minus u sin of v, u cos of v, of course 0, right? इसी तरह से मैं evaluate करूंगा r sub u, right? r sub uv, और मैं चाहूंगा तुम्हें खुद करो, ये तुम खुद कर सकते हो. Find them. ruv, rvv, ये सभी partial derivatives, and then you have to find this, क्योंकि वो लंबा चौड़ा है थोड़ा, इसमें जो हमें आगे करना है, तो you will find that तुम्हें मिलेगा e is equal to 1 plus f sub 1 का square, f मिलेगा जो कि हमने देखा था पहले 0, g मिलेगा u square, l मिलेगा u f11 divided by h, f11 का मतलब, ये तुम खुद निकालोगे, that's a home assignment. EFG एलिमेंट तुम्हें आता है कैलकुलेट करना, अब तक तो आना चाहिए. f1 का मतलब है f double derivative of f with respect to u. Of course, जैसा कि मैंने कहा m0 होना चाहिए. n is equal to u square f1
divided by h. तो lmn हमने निकाला, EFG निकाला, then of course h square is EG minus f square, किसके बराबर होगा? f तो 0 है, it is just EG, it is just u square into 1 plus f1 square, क्योंकि f 0 है. इसी तरह से t square is equal to ln minus m square, m तो 0 है, वो तो होगा फिर u cube f1 f11 divided by h square. So now the equation of the principal curvatures is given by h square, जैसे कि मैंने लिखा था, kn square minus en plus gl minus twice fm into kn plus t square is equal to 0. तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, it becomes, ये बन जाएगी h square को लिखेंगे हम of course u square into, या h square ही रखें, चलो रखते हैं ऐसे ही, ठीक है, u square into 1 plus f1 square k sub n square minus e into n. अब e into n हमें करना होगा, so that will be 1 plus f1 square, और जो हमारा n है वो क्या है? u square f1 divided by h, जो तुम्हें वैल्यूज करोगे, प्लस gl क्या आएगा? g is u square and l जो है that is u f11 divided by h, and f और m 0 है, तो हम इसको छोड़ सकते. Then I would have t square, so that would be u cube f11 divided by h square is equal to 0. Multiplying throughout by h square, I think you should get h square into u square into 1 plus f1 square into kn square minus, yeah, मैंने h square से multiply किया तो h बचेगा, 1 plus f1 square into u square f1 plus u cube f11 into h whole multiplied by kn plus u cube f1 f11 is equal to 0. और मुझे लगता है कुछ कॉमन आ रहा है, लेकिन उसको छोड़ते हैं अभी. h square को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा? h square is u square plus, so it should be actually u square into 1 plus f1 square का whole square into kn square minus, of course, put h में आ जाएगा square root, so yeah, h कॉमन निकाल सकते हैं. तो कॉमन निकालने का मतलब हुआ this should be u into root of 1 plus f1 square into under as it is 1 plus f1 square into u square into f1 minus u cube plus u cube into f sub 11 into kn plus u cube into f1 f11. अब as you can see, यहाँ मुझे u का फोर्थ पावर आ रहा है, यहाँ u स्क्वायर है, बाहर u है, तो u क्यूब वुड कैंसिल. तो u क्यूब को कैंसिल करने के बाद जो मुझे मिलेगा वो कॉमन फैक्टर है, दोनों साइड से डिवाइड करेंगे, यहाँ u है, u स्क्वायर है, यहाँ u क्यूब है. सो व्हाट आई गेट आफ्टर कैंसिलिंग दिस फैक्टर, यहाँ फोर्थ पावर था तो वहां u एक बचेगा, you would have something like this, n square, then I have minus, अंदर क्या बचेगा इधर, ओके u गया और ये u स्क्वायर भी गया, ठीक है, और यहाँ पे u बचेगा लेकिन अंदर, so let's write it down that way, it would be minus
क्या है u स्क्वायर, इसको बाहर ही रखते हैं, स्क्वायर रूट को 1 प्लस f1 स्क्वायर इंटू f1 इंटू 1 प्लस f1 स्क्वायर प्लस u f1 1 यहाँ एक एक्स्ट्रा था, 4 थे यहाँ पे, वहाँ पे भी 4 थे, प्लस ऑफ कोर्स यहाँ u क्यूब था तो वो तो गया, इट इज f1 f11 is equal to 0. Let me check again, right? So this is our equation. Now this gives, this being a quadratic in Kn, this being a quadratic in Kn gives two values of Kn given by, which are the principal curvatures, which are given by Kn is equal to minus b. तो माइनस बी का मतलब रूट ऑफ 1 प्लस f1 स्क्वायर इंटू f1 इंटू 1 प्लस f1 स्क्वायर प्लस u इंटू f11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस f1 स्क्वायर इंटू f1 इंटू 1 प्लस f1 स्क्वायर प्लस u इंटू f1 का होल स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर minus 4ac, that is u into 1 plus f1 square ka whole square into f1 f11 whole divided by twice a, twice u into 1 plus f1 square ka square. So this is what I get. तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, बल्कि सिंप्लीफाई होगा, तो पहले तो ये हम बाहर निकाल सकते हैं, ये जो ये फैक्टर है, मैं इसको निकाल सकता हूँ 1 प्लस f1 स्क्वायर इंटू f1 इंटू 1 प्लस f1 स्क्वायर प्लस u इंटू f11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, f1 इंटू 1 प्लस f1 स्क्वायर, राइट, का होल स्क्वायर, नहीं और भी है, प्लस u टाइम्स f11 का होल स्क्वायर, इसको मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचेगा, ये पूरा तो मल्टीप्लाई में नहीं था, थोड़ी सी दिक्कत है, मैं किसको बाहर निकाला, आई टेक दिस आउट ऑफ दिस, यहाँ से तो खैर था ही, यहाँ से भी आएगा, तो यहाँ था ये b स्क्वायर की वजह से आया था, 4ac, हाँ अगर मैं एक को बाहर निकाल दूँ दैट्स ओके, तो वो स्क्वायर रूट भी तो बाहर आएगा, so it should be 4 times u into 1 plus f1 square into f1 f11, so divided by twice u into 1 plus f1 square whole square, अब ये whole square है, यहाँ आधा पावर है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 1.5 बचेगा, यानी डिनोमिनेटर में मैं लिख सकता हूँ फिर twice u into 1 plus f1 square whole raised power 3/2, ये इसके साथ कैंसिल करने के बाद मुझे मिलेगा f1 into 1 plus f1 square plus u times f11 plus minus square root of, यहाँ क्या मुझे मिलेगा, यहाँ थोड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई, इट्स लाइक a plus b का स्क्वायर minus 4 times ab, isn't it? ये अपना a है और ये अपना b है, so a plus b square minus 4 times ab किसके बराबर होता है, that's equal to a square plus b square plus 2ab, so it is minus 2ab, that's a minus b का square, so it should be actually a minus b का square, that's f1 into 1 plus f1 square minus u times f1 का whole square, यूज करके, और ऑफ कोर्स इसका फायदा ये है कि ये हो गया कैंसिल, यानी दैट इज हमें मिलना चाहिए k sub n is equal to u times f11 plus f1 into 1 plus f1 square plus minus f u times f11
minus f1 into 1 plus f1 square. Now ये थोड़ा हो गया, सिंप्लीफाई हो, नीचे बचा है I think 2a root whole raised power 3/2. So if k and b, मतलब यही दो वैल्यू जो है ना प्लस और माइनस के, वो है प्रिंसिपल कर्वेचर्स. So if ka and kb are principal curvatures of the surface of revolution, they should be equal to then kn should be ka should be equal to एक वैल्यू प्लस वाला. तो अगर हम प्लस वैल्यू लेंगे तो ये फैक्टर कैंसिल होगा. You should just get twice u f11 divided by twice u into 1 plus f1 square whole raised power 3/2 and kb होना चाहिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा. तो सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे हम तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने में ये ट्वाइस मिलेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो इट शुड बी ट्वाइस f1 into 1 plus f1 square whole divided by twice u yes into 1 plus f1 square whole raised power 3/2. That is if इसको अगर further simplify करें तो 2u cancel, it would be f11 divided by 1 plus f1 square whole raised power 3/2 and kb जो होगा 2 cancel, ये भी cancel क्योंकि यहाँ डेढ़ है वहाँ 1 है. So it should be f1 divided by u into square root of 1 plus f1 square. Yes, so हम पहुंच गए, मैंने कहा कि और इसकी जो रेडियाई ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर्स हैं. Now if rho a would be equal to 1 by k, which would be 1 plus f1 square raised power 3/2 divided by f11, and rho b is equal to u 1 plus f1 square divided by f1, where rho a and rho b are radii of principal curvatures. Radii होती है, radius of curvature is the reciprocal of the curvature. Principal curvatures. कहाँ गए? ये पेज ही गायब हो गया क्या? मेरा बोल गायब हो गया? हाँ इधर. Principal, वो भी है principal curvatures. Okay, you can write it down. So that's what we have now. So these मतलब we derived for a surface of revolution and its Gaussian curvature जो कि ज़्यादा important है. Also the Gaussian curvature जो होगा k of the surface of revolution at a point is given by k is equal to ka into kb, the product of these curvatures. So it would be f11 divided by u into 1 plus f1 square the whole square. Multiply करके हमें यही मिलेगा. And the first curvature would be ka plus kb, but this is the important quantity, Gaussian curvature of a surface revolution. Again, ये f जो है this is f1 का मतलब है f dash t जो कि हमारी प्रोफाइल कर्व थी उसी की फंक्शन है. You have got z is equal to f of x और f of u उसी फॉर्मूला से आया है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव f1 है, उसका सेकंड डेरिवेटिव f sub 1 है. So let me stop it here. तो इसके बाद हम आगे करेंगे कल. Let me end the meeting here.